sharing the screen? No, I'm not sharing the screen. You write down. I will share the screen afterwards. I'm not sharing the screen. All of you. Write down about the VPP. The alternate function of this pin. The alternate function of this pin is that it receives. The alternate function of this pin is that it receives 12 volt programming enable voltage. 12 volt programming enable voltage. The alternate function of this pin is that it receives 12 volt programming enable voltage VPP. Enable voltage VPP during flash memory programming. During flash memory programming. During flash memory programming. During flash memory programming for chips that require 12 volt VPP. 12 volt VPP. That requires 12 volt VPP. That requires 12 volt VPP. That requires 12 volt VPP. Now this is the alternate function of that pin, that is the VPP, that is pin number 31. Pin number 31. Now this VPP pin is mostly used when you are using any other chip, and that requires 12 volt VPP. Okay, and that mostly used when you are using the flash memory programming. Flash memory programming means if you are using the ROM. ROM can be also said as the flash memory programming, where ROM can be erasable. That means you can use that ROM for overwriting. Okay, so flash memory programming अगर हम कर रहे हैं और वो टाइम पे अगर if I require a 12 volt, okay, that time we can use this VPP. So mostly this VPP will have the 12 volt. Okay, so this is not so important pin, so that's why you can just write down the sentence, और अगर आप नहीं भी लिखते तो it's okay, because EA bar is more important as compared to VPP. Okay, and the other one is that is a PROG bar. Okay, so for this PROG bar, you just write down one sentence. Write down PROG bar. Write down PROG bar is used. PROG bar, that is active low. Okay, so PROG is used whenever we are programming 8051. Whenever you require to program your 8051. So PROG is used whenever the programming of 8051 is concerned. Okay, so just one sentence is required. Now what is this PROG bar? Whenever you want to program your 8051, okay, program your 8051 means whenever you want to burn the code into 8051. Whenever you want to burn the code into 8051, that time this pin will be kept as 0. आपको पता है मुझे अगर कोड बर्न करना है, 8051, दैट मीन्स मैं एड्रेस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटा यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोग्राम बर्न कर रहा हूँ 8051. तो वो कंडीशन में if you see properly pin number 30, then that pin number 30 will not be 1, because I am not using the latch, I am not using the address, I am not using the data, I am not using the address latch enable pin ALE. So in that case, this that time this pin will be 0. So
जब कभी हमको प्रोग्राम करना है और कोड अगर बंद करना है तो वो पिन हमको 0 रखना है. In all other cases this will be 1, because other cases में I require data, I require address, okay, and whatever the operations I will be doing, in all the cases this pin will be high, this pin will be high. Okay, so this is about the remaining pin of VPP and PROG bar. Okay, remaining pin of VPP and PROG bar. I think I have covered all the pins. Now in general we will be also understanding understanding the pins like port 0, port 1, port 2 and port 3. Okay, इसके functions आपको पता चला है, but overall I think not required to, it is not required to be written, but जैसे मैंने बताया था port 0, port 1, port 2, port 3, they are all bidirectional. They are all bidirectional and they are 8-bit. Okay, they 8-bit. But a few sentences also can be written for PROG bar. So that thing I will share on the screen for the circuit for that. Okay, and you will be able to understand this figure, because that is more important about the port 0. Port 0 is important, और उसके लिए you have a figure I will share on the screen. My screen is visible to everyone? Yes, sir. हाँ. So as far as port 0 are concerned, see what are the points which are common to port 0, port 1, port 2 and port 3. The common points are that these all the ports are 8-bit bidirectional. They are 8-bit bidirectional IO ports. Okay, they are 8-bit bidirectional IO ports. और जैसे मैंने बताया था कि the some pins, for example, port number 1, they are purely 8-bit IO directional ports. It does not have any alternate function. Okay, then come port number 0. Port number 0, they are 8-bit bidirectional and some more important additional points, and that is present on the screen, that is available on the screen. This thing I will explain you. This is important. Okay, so port 0 का ये additional part है which is not available in port 1, port 2 and port 3. And the other thing is that port 0 they are also having alternate function, that is AD0 से लेके AD7. Okay, उसके बाद then we go with the port number 3. Port number 3 में भी that is also 8-bit bidirectional. Along with that there are some additional alternate functions. That alternate functions I also have explained. Similarly for port 2, it is also 8-bit bidirectional, but along with the 8-bit bidirectional, it is also having some important alternate function, that is higher order address lines. Higher order address lines are A8 to A15. Okay, so what is so peculiar about port 0, that is we are going to see on the screen. All of you see on the screen now. Now whenever I want to use this port 0, whenever I want to use this port 0, that is P0.0 से लेके P0.7. okay, now these ports I can use as a 8-bit bidirectional IO ports. 8-bit bidirectional IO ports. Okay, but these all the ports are open drain. These all the ports are open drain. All the ports are open drain. Now just try to understand the concept of open drain. Open drain means they will have a higher output current value. Their output current rating will be more because they are open drain. They are open drain. Because of open drain, they are having the higher current
rating value. Okay, so how do you limit this current value? How do you limit this current which is flowing as an output? So for that, you have to connect external circuit, and this is the external circuit which is connected. This is the external circuit which is connected. So every pin will be connected to VCC through a resistance of 10K. Again, I am repeating, every pin will be connected to the VCC through the resistance of the value of 10K. So these 10K resistors, total there will be 8, and they are called as pull-up resistors. They are called as pull-up resistors. Pull-up resistors. Pull-up resistors means these resistors will be pull up to the VCC. That is 5 volt. So whatever the volt you are giving, okay. So this is the only peculiarity about the port 0, and about the port 1, port 2 and port 3. All these ports are having internal pull-up resistors. इंटरनल पुल अप रेजिस्टेंस बोले तो हमको एक्सटर्नली ये सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है. So port 1, port 2 and port 3, they are having internal pull up resistance, so that is present inside the chip. That provision is provided inside the chip. So other than port 0, all the other ports are having internal pull up resistance. Okay, and only port 0, as they are open drain, they have to be connected in such a manner. That's why they are connected, individual pins are connected to the VCC through the resistance, and these resistors are called as pull up resistors, and the value of pull up resistor is 10K. The value of pull up resistor is 10K. So you can write down only one sentence. You just write down the heading as port 0. Port 0. Port 0. Write down. Port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. Port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. You can draw this figure also. Draw this figure and write further. आपने लिखा था कि port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. Full stop. It occupies 8 pins. That is pin number 32 to 39. It occupies 8 pins, pin number 32 to 39. It occupies 8 pins, pin number 32, 39. Full stop. Since all pins are open drain, comma, to use P0 as an input or output, since all pins are open drain, to use P0 as an input or output, comma, the external pull-up resistor of 10 kilo ohm, ब्रैकेट में लिखो वैल्यू ग्रेटर देन 1.42 किलो ओम. हमने 10 किलो ओम लिया, बट द वैल्यू कैन बी मोर देन और ग्रेटर देन 1.42 किलो. तो ब्रैकेट में लिखो वैल्यू ग्रेटर देन 1.42 किलो ओम. ब्रैकेट में क्या लिखना है? वैल्यू ग्रेटर देन 1.42 किलो ओम. ब्रैकेट क्लोज. must be connected with each pin as shown in figure. With each pin as shown in figure. With each pin as shown in figure. Okay. So this is the only one thing. So port 1, port 2, port 3 जो मैंने आपको सिखाया था वही है. So you can refer any of the books.
Okay, and that will give you the explanation about this. Okay, so if you have understood this, shall we proceed further? We have done with the pin configuration now. Do you have any questions related with any of the pins? If it is okay, we will proceed further. So हाँ would you please explain the meaning of open drain? हाँ ओके, देखो ओपन ड्रेन का क्या मतलब होता है कि जब मैं ये पोर्ट जीरो यूज कर रहा हूँ, पोर्ट 0.0 से लेके पोर्ट 0.7, ओके, नाउ एज दे डू नॉट हैव इंटरनल पुल अप रजिस्टर, इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट वैल्यू. अगर मैं रजिस्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल तो इनके पास रजिस्टर नहीं है, दूसरी बात हम एक्सटर्नल अगर रजिस्टर नहीं लगा रहे तो क्या होगा, ये जो पिन्स है यहाँ पे करंट वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज यू आर गिविंग द +5 volt. ओके, सो इफ आई एम ट्रांसमिटिंग द डेटा, if I'm using as an output port or if I'm using as an input port, because of this current, that data won't be accessed. और अगर मैं आउटपुट बोल रहा हूँ तो that data won't be given as out. और अगर मैं इनपुट पोर्ट जैसे यूज कर रहा हूँ तो दैट डेटा वोंट बी एबल टू बी टेकन एज एन इनपुट बिकॉज ऑफ द करंट वैल्यू विच इज ग्रेटर, बिकॉज ऑफ करंट वैल्यू, करंट यहाँ पे ज्यादा होता है, द करंट रेटिंग इज मोर. सो हाउ डू यू लिमिट दिस करंट? you have an option of connecting your register. हम करंट को कम कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू रेजिस्ट द करंट? you connect the register. So the register should be greater than 1.42 kilo ohms. The register should be greater than 1.42 kilo ohms. So we can take 10 kilo ohms. So the 10 kilo ohms. So every 10 kilo ohms register should be connected in this manner. So these registers are called as pull-up registers. They are called as pull-up registers. And other than port 0, other ports, that is port 1, port 2 and port 3, they are having internal pull-up registers. वो चिप के अंदर ही होते, वो चिप के अंदर ही होते. Okay, so for them no need to connect external registers. Okay, so open drain का मतलब होता है कि because of the more current rating value, so how do you limit them or how do you resist them? Just connect the register. Just connect the register. That is the only way in which we can limit the register. We can limit the current. Is it fine to you? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So port 1, port 2, port 3, they are having internal pull-up registers. You can write down the note. Other than port 0, other ports, that is port 1, port 2, port 3, are having internal pull-up registers. Any more questions you have? Any more questions you have? Shall we proceed? कोई तो भी acknowledge करो. हाँ. Okay. Now we will be able to understand now. हम अभी क्या पढ़ने वाले? अभी हम पढ़ने वाले स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, और हम ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स 1 by 1 लेंगे. ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आपको इतना ही पता है कि टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 21 है, 21 है, 21 आर देयर. So this 21 registers, few of them you are familiar with. आपको पता है, few of them are you are familiar with. Okay, so these, हाँ, yes. सर एक डाउट था. हाँ. सर in that port we have written P0.0 P0.1. Sir, what does that mean? इसका मतलब यही होता है कि P0, इसका मतलब ये होता है कि ये सब पोर्ट 0 से एसोसिएटेड है, और 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 का मतलब है दिस इज 0th pin, this is first pin, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth and this is seventh. Okay, so it means that for port 0 we have 8 pins. For port 0 we have 8 pins, and individual pins are given as P0.0, P0.1, ... P0.7. Okay, sir. हाँ, बस.
और दूसरी बात भी है कि ये जो हम लिखे हैं ना, these ये जो आपने लिखा है P0.0 से लेके P0.7, दे आर ऑल्सो यूज इन इंस्ट्रक्शंस में। हम ये लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में। अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे लिखना है रिलेटेड विथ P0.4, तो P0.4 विल बी यूज इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द वे इन विच द पिन नंबर्स आर गिवन फॉर द पोर्ट्स। अगर पोर्ट 2 की मैं बात करूंगा तो पोर्ट 2.0, 2.1 डॉट 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 P2.7 ऐसा रहेगा। तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट। इज इट फाइन? यस सर। हाँ, तो अभी हम जब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं टोटल 21, उसमें से कुछ आपको पता है। अभी हम रजिस्टर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जब हम पढ़ेंगे ना, सो वी विल बी स्टडिंग द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, द ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद सम स्पेशल फंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 8051 के पास इंटरप्ट है, आपको पता है कि 8051 के पास टाइमर और काउंटर है, आपको पता है कि 805 के पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर है, TXD और RXD है। ओके, तो ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है ना, कुछ रजिस्टर्स इंटरप्ट्स के रिलेटेड होते हैं, कुछ रजिस्टर्स टाइमर्स और काउंटर्स के रिलेटेड होते हैं, कुछ रजिस्टर्स सीरियल कम्युनिकेशन के रिलेटेड होते हैं, एंड सो फोर्थ। तो हम जब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पढ़ेंगे तो हम रैंडमली नहीं पढ़ेंगे, हम वो पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स विच आर डूइंग सम स्पेशल फंक्शन, उसी वैसे वैसे हम पढ़ने वाले। ओके, तो द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रजिस्टर्स विच आर related with serial communication, okay, so which are the special function registers which are related with the serial communication? They are like number 1 SBUF, number 2 SCON, and number 3 PCON। okay, तो हम ये 3 रजिस्टर्स पढ़ने वाले because they are associated with the serial communication। okay, they are associated with the serial function। so are you ready to understand the special function registers now? so just write down the heading serial communication। तो अभी हम सीरियल कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड ये जो रजिस्टर्स है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, वो भी हम पढ़ने वाले। ओके, दैट थिंग आल्सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। so I will share the screen to explain you now। yes, आपने क्या हेडिंग लिया है? सीरियल कम्युनिकेशन। आपने हेडिंग क्या दिया है? सीरियल कम्युनिकेशन। so serial communication के related some different, before we actually go with the special function registers, we need to understand some of the important things। okay, now here if you see on the screen, मेरा screen सबको visible है? okay, so while explaining you can just draw फटाफट और मैं explain करता हूँ this। okay, now what is this figure now? 8051 जहां तक concerned है, we can go with the parallel communication as well as we can go with the serial communication। parallel communication मैंने आपको बताया था। what is a parallel communication? parallel communication means all the 8 bits are given to the receiver at the same time। suppose imagine लेफ्ट साइड में ट्रांसमीटर है, राइट साइड में रिसीवर है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए मेरे पोर्ट्स है, अभी जो मैंने सिखाया पोर्ट्स, और आपको पता है हर एक पोर्ट 8 पिन के होते हैं। तो ये पूरे के पूरे 8 पिन अगर मैंने रिसीवर को लगा है, तो डोंट यू थिंक आई एम ट्रांसमिटिंग द 8 बिट ऑफ डेटा पैरेलली? और एक दूसरा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो होता है सीरियल में भी वही हमें इमेजिन करो कि लेफ्ट साइड में ट्रांसमीटर है और राइट साइड में रिसीवर है, और देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन। पहले पैरेलल में 8 लाइन्स थे, सीरियल में सिर्फ एक ही लाइन है। और आपको पता है सीरियल कम्युनिकेशन में अगर मुझे 8 बिट्स भेजने हैं, आई कैन नॉट सेंड all the 8 bits at the same time, I have to send one by one। so पहला bit, second bit, third bit, fourth bit, and this will go one by one। that's why
I can say parallel communication is faster as compared with the serial communication. Okay, so as far as the type of data transfer is concerned, you have only two types of data transfer, that is serial and parallel. While explaining आपको कोई important point लगता है तो you please jot it down. हमेशा notebook और pen हाथ में रखो. Okay, so serial and parallel communication. So for that the diagram is the same. Left में transmitter, right में receiver. दोनों को connect करने के लिए 8 lines for parallel, single line for serial. Now comes what are the different communication links. You can see on the screen now. Now transmitter and receiver, left में transmitter, right में receiver. दोनों को connect करने के लिए एक single line. So I can say this is a serial communication, but this is a simplex link. This is a simplex link. Simplex में क्या हो रहा है, एक में ट्रांसमीटर है, दूसरे में रिसीवर है. सिर्फ ट्रांसमीटर भेज सकता है और रिसीवर रिसीव कर सकता है. तो दिस इज अ सिंप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एक ब्लॉक है जहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है और दूसरा ब्लॉक है जहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है. तो अगर ये लेफ्ट वाला ब्लॉक को ट्रांसमिट करना है तो वो राइट वाला ब्लॉक रिसीव करेगा, और अगर राइट वाला ब्लॉक को ट्रांसमिट करना है तो वो लेफ्ट वाला ब्लॉक रिसीव करेगा. लेकिन देयर इज ओनली सिंगल लिंक. कैन आई से इन द हाफ डुप्लेक्स only one can transmit and other can receive, or other can transmit and this one can receive. So only half duplex, but that is not the case here. Because you have two different links, one link for transmitting and other link for receiving. अगर इसको ट्रांसमिट करना है तो ये लिंक यूज करेगा, तो ये ट्रांसमिट करेगा और ये रिसीव करेगा, और ये अगर इसको ट्रांसमिट करना है तो that so this block will use this link so that this can transmit and this can receive. Okay, so can I say this link will be used for this transmitter and for this receiver, and this link will be used for this transmitter and this receiver. So agar this type of link is we see, then we will say it is a full duplex. And if you see a single link जहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर भी होके हम सिंगल लिंक यूज कर रहे हैं, तो then it is called as a half duplex. और अगर ऐसा केस है कि एक ट्रांसमीटर है और दूसरा रिसीव है, तो obviously there is a single link, then it is called as a simplex. Only one way communication is happening, other way communication is not happening. But in these two cases there are two-way communications, but there is with some restrictions. Okay, so these are called as a different communication links. ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, because I am explaining you serial communication of 8051, और as far as 8051 is concerned, you know that it is a आपने ब्लॉक डायग्राम में भी लिखा था UART, यूनिवर्सल असिंक्रोनस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. और कौन से दो पिन से यहाँ पे यूज हो रहे हैं, TXD ट्रांसमिट करने के लिए सीरियल डेटा और RXD सीरियल डेटा रिसीव करने के लिए. ओके, so for that I need to explain you some of the important points. Okay, so this is a communication. Any questions do you have related with this, so that we can proceed further? If you don't have questions, कोई तो भी बोलो, sir, proceed. So shall we move further? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope you have drawn this. And simplex, half duplex, and full duplex. You can explain in your own words. Now we will be understanding some other more terms. Which are the terms? Now जैसे आपको पता है 8051 मेरा UART है, that is universal asynchronous transmitter and receiver. Universal asynchronous receiver and transmitter. Now for that we should actually know what are the types of serial data communication. Okay, so you can just write down the types of serial data communication. Write down the heading as types of serial data communication.
So one thing is clear, that under the serial communication, not parallel, not parallel. Under the serial communication, we have two types, and which are they? They are, write down number one, synchronous serial data communication, and number two, asynchronous serial data communication. And number two, asynchronous serial data communication. Asynchronous serial data communication. Okay, so we are going to understand the synchronous serial data communication, then we will go with the asynchronous. और आपको पता है 8051 supports asynchronous, लेकिन asynchronous समझने के पहले हमको synchronous भी समझना चाहिए. Okay, so for that I am explaining you both the concepts. Please pay attention on the screen now. Pay attention on the screen. Now you can see here I am explaining you now synchronous transmission. Now here you have a transmitter and here you have a receiver, and your transmitter wants to transmit the data serially. So this is my data, this is my data, this is my data. Okay, 8 bit of data. Now synchronous में क्या होता है? All of you pay attention now. Synchronous में क्या होता है? Now it might happen that transmitting speed of transmitter and the receiving speed of receiver may differ. They may not be the same. They may not be the same. That means there is no compatibility in the speed. इसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, इसकी स्पीड कम हो सकती है, या फिर इसकी ट्रांसमिटिंग स्पीड कम हो सकती है, इसकी रिसीविंग की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है. So there has to be a synchronization between the transmitter and the receiver. So that's why there is a single clock which is connected to transmitter and the receiver. Single clock का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी लगा रहा हो, the same clock frequency is also applied here. और आपको पता है जो कुछ भी ट्रांसमिशन और रिसीविंग होता है, that is in the reference with the clock pulses. That is your clock pulses. So here the transmitting clock pulses and the receiving clock pulses are the same, so that we can achieve the same speed. So that we can achieve the same speed, transmitting speed and receiving speed. And one more thing, whenever you transmitting the data, whenever you transmit the data, along with the data, you are sending one more character that is called as a sync character. You are transmitting one more character that is called as a sync character. So sync character जो है, that is appended with the data. अभी आपका data है, always we are transmitting serial data one byte, यानी 8 bits हम transmit करते हैं. उसके बाद जो next data है वो भी 1 byte का जाता है, वो भी serially जाता है. तो जैसे suppose this is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So I can say this is 1 byte. But this 1 byte of data, actually हम 7 जो bits है वो data के भेज रहे हैं, और एक जो bit है वो synchronous character के भेज रहे हैं. Why synchronous character? So that the receiver will come to know that before the synchronous character or after the synchronous character, the data, whatever it is receiving, it is the pure data. It is a pure data. So how do you achieve the synchronization between the transmitter and the receiver? You apply the same clock frequency, as well as the 1 byte of data. 1 byte of data contains 7 pure data bits and 1 synchronization character. And why synchronization character? So that the receiver will come to know after the synchronization character, whatever the data it is receiving, it is the pure data. It is the pure data. अभी ये तो सीरियली हमने भेज दिया, इसके बाद भी अगर मुझे डेटा भेजना है तो वो यही फॉर्मेट में जाएगा. Okay, so what is this figure? This is synchronous transmission format. So this is a format of how the data will be transmitted serially. Okay, तो हमेशा याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक प्योर डेटा है, और ये वाला जो है ये सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर, दैट इज अ सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर. ओके, एंड ये आपने एक ही क्लॉक दिखाया, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी लगा रहा हूँ वो सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे भी लगानी पड़ती है, सो दैट there is a synchronization between the transmitter and the receiver. I hope you have understood this. Any questions you have?
See, someone of you have to acknowledge. मुझे नहीं समझ में No, आएगा sir. कि समझा कि नहीं समझा. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So this is how the synchronous transmission data format is there. Now come to the asynchronous data format. Okay. Now here asynchronous data format में क्या देखो? Transmitter is there and receiver is there. But can you see a clock 1 and clock 2? So clock 1 and clock 2, so they are different clock. They are different clock because we are understanding asynchronous data transfer. Asynchronous data transfer में transmitter 1 का clock different, receiver का clock different. So there is no synchronization. There is no synchronization. But then also अगर transmitter को data भेजना है serially, then there has to be a synchronization. So how the synchronization is achieved? Can you see a data D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7? So this is a 1 byte of pure data. But along with the pure data, there is a start bit and there is a stop bit. Start bit shown by 0. ये देखो ये 0 है. And the stop bit is shown by 1 because this is 1. ये नीचे से ऊपर जा रहा ना, so this is 1. ये ऊपर से नीचे जा रहा, so this is 0. So can I say in between start bit and stop bit, my 1 byte of pure data is transmitted. अब ये start और stop bit क्यों भेज रहा हूँ मैं? Now there is no synchronization, but synchronization can be achieved by sending start bit and stop bit along with the data. तो जब रिसीवर को पहले स्टार्ट बिट मिलेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके बाद के जो बिट्स है वो प्योर डेटा है, और स्टॉप बिट जब मिलेगा तो पता चलेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द डेटा, या फिर स्टॉप बिट के जो पहले जो मिला है दैट इज अ लास्ट बिट ऑफ प्योर डेटा. तो रिसीवर को पता चलेगा कि स्टॉप बिट मिला है. देन अगेन अगर ट्रांसमीटर को भेजना है तो ट्रांसमीटर यही फॉर्मेट में भेजने वाला है, पहले स्टार्ट बिट, बाद में 8 बिट्स ऑफ प्योर डेटा और बाद में स्टॉप बिट. सो हाउ मेनी टोटल बिट्स आर वी आर एक्चुअली सेंडिंग? 1 plus 8 9, 9 plus 1 10. So total 10 bits I'm sending. Okay. और यहाँ पे मैं कितना भेज रहा था? 1 byte, in which 7 bits are pure data and 1 bit is of synchronized character. Okay. So this is how in the asynchronous we have start bit and stop bit. In the synchronous we have sync character. Okay, we have sync character. And clock frequencies which is applied to the transmitter and the receiver are the same or with the same clock frequency, but here the clock frequency are different. And one important thing, while transmission it might happen that data may get errored or it may be manipulated. ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट करते करते 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया. So in that case you are along with the start bit and stop bit you can set one more bit that is called as a error checking bit, and that is a parity bit. So that can be sent just before the stop bit. Okay. वो parity bit का क्या मतलब है? Suppose मेरा ये डेटा है, टोटल कितना प्योर डेटा है? 8 बिट, और ये these are in the form of zeros and ones. और अगर मैं देखता हूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ वंस ये डेटा में अगर 3 है, so the parity bit will be 1. 1 indicates that you are having your data contains 3 number of ones, and if your data contains suppose 2 number of ones, then it is a even parity, and even parity is shown by 0. So that additional parity bit that is used for error checking. तो कभी ट्रांसमिशन में 0 का 1, 1 का 0 हो गया. So this is just for your understanding that along with the start bit and stop bit, you can set one more bit that is called as the error checking bit, that is a parity bit. And the meaning of the parity bit I have explained you just. Okay, so you can just draw these two figures. Okay, for synchronous transmission format, this is a figure. Asynchronous is this. So as far as 8051 is concerned, we are using asynchronous format. In the asynchronous format, start bit के बाद में टोटल 8 प्योर बिट्स डेटा बिट और उसके बाद स्टॉप बिट, और अगर लगे तो स्टॉप बिट के पहले आएगा पैरिटी बिट फॉर एरर चेकिंग. एनी क्वेश्चंस यू हैव रिलेटेड विद दिस? Yes, sir. हाँ बोलो. So what is the significance of the start and stop bit? Like, why doesn't it begin with D0 and directly end at D7?
See here, as I have told you that clock 1 frequency is different from clock 2. Okay, so that means there is no synchronization between the transmitter and the receiver. So when there is no synchronization in the transmitter and the receiver, ऐसा हो सकता है कि ट्रांसमिटिंग की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, आई मीन टू से दैट उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है और रिसीवर की स्पीड कम हो सकती है, और वाइस वर्सा. सो इन दैट केस हाउ डू आई अचीव द सिंक्रोनाइजेशन? तो रिसीवर को पता होना चाहिए ना कि मेरा बीट ट्रांसमीटर ने बीट भेजा है, तो एक्चुअली दैट रिसीवर शुड कोप अप दैट स्पीड. So even though the clock frequency are different, it is not going to cope up the speed, but at least by sending the start bit and stop bit, receiver को पता चलता है कि start bit आया, इसका मतलब 0 आया, इसका मतलब उसके बाद जो कुछ आएगा 8 bit, that will be the data, that will be the data. और 8 bit मिलने के बाद stop bit जब मिलता है तो receiver को पता चलता है कि now this is the end of the first cycle. ओके, यानी ट्रांसमीटर पहले क्या भेजेगा? स्टार्ट बिट. उसके बाद क्या भेजेगा? D0. उसके बाद क्या भेजेगा? D1. उसके बाद क्या भेजेगा? D2. वो हिसाब से रिसीवर भी वो हिसाब से रिसीव करेगा विथ इट्स ओन स्पीड, जब लास्ट में D7 मिलेगा वो रिसीव करेगा. बाद में जब स्टॉप बिट मिलेगा तब उसको पता चलेगा कि स्टॉप बिट के पहले जो भी मैंने रिसीव किया है वो सब प्योर डेटा है, और बाद में दैट विल रिसीव ऑल द 8 बिट्स. And in the similar fashion, transmitter can send the other format in the same format. वो same format में भेजे. So start and stop bit is just an indication to the receiver that whatever I am receiving between start and stop bit, that those bits, 8 bits or 1 byte are the pure data. Okay, is it clear? Yes. So that is the way how we are coping up with the, even though the synchronization is not achieved, the speeds are different, but with the help of start and stop bit, with its own speed, it will be able to understand that between this start and stop bit, whatever the data is I am receiving, that is the pure data. Okay, that is the way. Any more questions you have? Yes, sir. Okay. So what would be the status of the start and the stop bit? Like it depends on this? No, always your start bit will be 0 and always your stop bit will be 1. So Okay. your start bit will be low, and your stop bit will be 1. तो जब कभी रिसीवर को जब पहला 0 मिलता है तो उसको समझता है कि ये स्टार्ट बिट है, उसको समझता है कि दिस इज अ स्टार्ट बिट. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि D7 बिट भी अगर 1 है, D7 भी बिट 1 है, तो उसको लगेगा कि दैट इज अ D7 बिट, whether that is a 1 corresponds to the last D7 or it is a stop bit. But the format is in such a manner that start bit के बाद जो भी उसके बाद के जो भी 8 बिट्स है, that is pure data, and the last 8 बिट के बाद जो भी आएगा that is ये 1 plus 8 gives you 9, so 9 के बाद ये 10 है, so 10 bit will be the stop bit. So this is just for the confirmation कि stop bit has been received, and depending upon that it will stop receiving the bit, and for the अगर ट्रांसमीटर को फिर से भी अगर कुछ भेजना है, it has to send in this particular format. Okay. Yes, sir. Okay. सर So हाँ, yes. सर लेकिन 8051 में डेटा पैकेट्स के टर्म में नहीं जाता ना, पिंस में से जाता है. तो सर पिंस 8 ही है ना, तो सर 10 बिट डेटा कैसा जाएगा? नहीं, आप जो 8 पिंस की बात कर रहे हो वो पैरेलल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो. मैं सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, और सीरियल कम्युनिकेशन में हम TXD और RXD पिन यूज कर रहे हैं, सिंगल पिन. अगर मुझे ट्रांसमिट करना है सीरियल डेटा तो TXD पिन के थ्रू मैं सीरियली डेटा ट्रांसमिट करूंगा, और अगर मुझे सीरियल डेटा रिसीव करना है तो RXD पिन के थ्रू ही रिसीव करूंगा. ओके सर. हाँ, तो उसके लिए मैं आपको और एक फिगर बताता हूँ. Yes, see this is a figure. Pay attention now. Serial communication between two microcontrollers. ये देखो, ये भी एक माइक्रोकंट्रोलर है 8051, और वो सपोर्ट करता है UART, that is यूनिवर्सल असynchronous रिसीवर एंड ट्रांसमीटर.
जब यूआरटी की बात आती है तो आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर के पास टीएक्सडी पिन है और आरएक्सडी पिन है। वैसे दूसरा और एक माइक्रो कंट्रोलर है 8051। अभी इसको और इसके साथ सीरियल कम्युनिकेशन करना है, तो वो टीएक्सडी, सपोज इसको ट्रांसमिट करना है तो वो टीएक्सडी के थ्रू ट्रांसमिट करेगा और ये आरएक्सडी के थ्रू रिसीव करेगा, और अगर इसको ट्रांसमिट करना है तो ये टीएक्सडी के थ्रू ट्रांसमिट करेगा और ये आरएक्सडी के थ्रू रिसीव करेगा। So can I say here what kind of communication link you are seeing? अभी हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स देखा, उसमें से कौन सा है यहाँ पे? Full duplex. Yes, it is a full duplex because your 8051 supports full duplex mode. So that's why transmission and RxD, TXD and RxD are used for serial communication, not for parallel. For parallel, you have ports, port 0, port 1, port 2, and port 3. Okay, and the connection has to be done in this manner. Here, just an example to show you that how two microcontrollers of 8051 can communicate with each other through the serial communication. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर तो इसमें हाँ. इसमें मतलब TXD एंड RxD में पैकेट्स के टर्म पे डेटा जाएगा क्या सर? तो इधर पैकेट्स नहीं जाएगा, सीरियली सर, बोलेंगे लेकिन तो अगर बिट्स जाएगा तो मतलब एक एक बिट जाएगा तो हाँ एक एक बिट ही जाएगा यहाँ पे। हाँ एक ही बिट जैसे Okay. मैंने यहाँ पे बताया था ना, हाँ मैंने जैसे यहाँ पे बताया था ना सिंक्रोनस में, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था ना, ट्रांसमीटर पहले क्या भेजेगा? स्टार्ट बिट, उसके बाद क्या भेजेगा? D0, उसके बाद क्या भेजेगा? D1, उसके बाद भेजेगा D2 डॉट 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 D7, उसके बाद फिर भेजेगा स्टॉप बिट, और वो हिसाब से रिसीवर रिसीव करेगा। वैसे रिसीवर पहले क्या रिसीव करेगा? स्टार्ट बिट, उसके बाद क्या रिसीव करेगा? D0, बाद में क्या रिसीव करेगा? D1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में फिर स्टॉप बिट। इज इट फाइन? पैकेट्स में नहीं जाते डेटा हमारे, यहाँ पे पैकेट्स में नहीं जा रहे, यहाँ पे सीरियली जा रहे, 1 बिट एट अ टाइम। इज इट ओके? यस सर। हाँ, नाउ राइट डाउन द हेडिंग एज। अब तक हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स तक नहीं पहुंचे, उसके पहले हम हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? अभी लिखो बॉड रेट, BAUD बॉड रेट, RATE, BAUD baud rate, RATE rate. Now what do you mean by baud rate? Please try to understand. This is also important कि baud rate क्या होता है? Okay, now baud rate means what? The baud rate is what? It is the rate at which the bits are transmitted. That means in simple language I can say number of bits transmitted per second. Number of bits transmitted per second is called as a baud rate. There is other word for that baud rate, that is called as a transfer rate. हम क्या रेट से ट्रांसमिट कर रहे हैं? नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ओके, और अगर मैंने baud rate का रेसिप्रोकल लिया, that is 1 upon baud rate, then actually what is that? It will give you the information that the time required to send 1 bit. Do you agree with that? The time required to send 1 bit. For example, if I am sending at the baud rate of 9600, now this 9600 is a standard baud rate for as far as 8051 is concerned. तो 9600 baud rate अगर मैं भेज रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि I am sending 9600 bits per second. I am sending 9600 bits per second. और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, that is 1 upon 9600, then it comes to the 0.104. So reciprocal of 19600 का मतलब होता है 1 second divided by 9600. 1 second divided by 9600. So it gives you 0.104 millisecond. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक बिट भेजने को कितना टाइम लगता है? तो कितना टाइम लगता है? 0.104 मिलीसेकंड। 0.104 मिलीसेकंड। ओके, और इम्पोर्टेंट बात ये है, और एक वन मोर थिंग अबाउट द baud rate, क्या दैट दिस baud rate का जो डेफिनेशन है ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू असिंक्रोनस फॉर्मेट, लेकिन तो भी हम baud rate यूज करते हैं।
Why it is not, please all of you pay attention, this is important concept. Why it is not applicable, this definition, to the asynchronous? Because don't you think that along with the 8 bit of data, we are actually sending the start bit, stop bit, and sometimes the error correcting bit, that is a parity bit. तो मुझे 8 बिट का जो डेटा, प्योर डेटा भेजना था, उसके साथ मैं बाकी की चीजें भी भेज रहा हूँ. So that will not actually justify the definition of a baud rate. Okay, so baud rate is purely for the data transmission. और अगर मैं synchronous की बात करता हूँ, now synchronous में actually I am transmitting one byte. I am transmitting one byte. If you see carefully, you can see on the screen also. I am sending total 8 bits, but within that 8 bits, 7 bits are the pure data, but there is only one sync character. But that is okay. That is okay. The only thing is that I am transmitting one byte and transmitting one byte. One byte in the form of serial communication. पहला bit, second bit, third bit, fourth bit, fifth, sixth, seventh, eighth. और 8 वाला जो bit है मेरा, सबसे पहले जो जाएगा तो वो तो sync character जाएगा to achieve the synchronization. Okay, so mostly the baud rate is applicable to the synchronous communication, but it is not actually applicable for the asynchronous communication, and I have given you the reason for that. Okay, I have given you the reason for that. But then also, if I am seeing the baud rate of 9600 for 8051, then it is understood, okay, that is 8051 bits I am sending, irrespective of start bit, stop bit, and parity bit. Okay, so you can just write down a few sentences of the baud rate. आपने क्या लिखा? baud rate का definition लिखा. No, I think we have to write down the baud rate. Write down baud rate. The rate at which the bits are transmitted. The rate at which the bits are transmitted. Bracket में लिखो bits per second. Bits per second. The rate at which the bits are transmitted. Bracket में लिखो bits per second. Is called baud rate or transfer rate. Is called baud rate or transfer rate. Full stop. The baud rate is the reciprocal of the time to send one bit. The baud rate is the reciprocal of the time to send one bit. The baud rate is the reciprocal of the time to send one bit. In asynchronous transmission, full stop. In asynchronous transmission, baud rate is not applicable. In asynchronous transmission, baud rate is not applicable because each byte is preceded by a start bit. Because each byte is preceded by a start bit and followed by parity and stop bit. आपने क्या लिखा? Because each byte is preceded by a start bit and followed by parity and stop bit. Parity and stop bit. So because of these additional bits, this is mostly not applicable, but sometimes we use this baud rate for asynchronous transmission also. Okay, you can write an example. If baud rate is of 9600, if baud rate is of 9600, उसका यूनिट होता है baud. Okay, so you can say if the baud rate is of 9600 baud, BAUD. If the baud rate is of 9600 baud, baud, then it means that 9600 bits are transmitted in a 1 second. It means that 9600 bits are transmitted in 1 second. It means that 9600 bits are transmitted in 1 second. 9600 bits are transmitted in 1 second. Full stop. Also, for 1 bit
also for 1 bit comma, transmission time is equals to, for 1 bit comma, transmission time is equals to, for 1 bit comma, transmission time is equals to 1 second upon 9600, 1 second upon 9600 is equals to 0.104 millisecond. 0.104 millisecond. 0.104 millisecond. 0.104 millisecond. But these are the concepts which I have to explain before I start with the SBUF. Now, before I end, just for 1 minute, you just write down for the write down in the next para. 3 special function registers. 3 special function registers which support serial communication. Are write down SBUF register, capital S, capital B, capital U, capital F. Capital S, capital B, capital U, capital F. SBUF register, comma, SCON register, capital S, capital C, capital O, capital N. SCON register. And PCON register, capital P, capital C, capital O, capital N. PCON register. Okay. So in the next lecture, I will start with the SBUF register. Then we will see the SCON register, and then we see the PCON register. Achha, one more thing before I go. You have classes till what time today? Till 4:30. 4:30. Achha, till you have 4:30. Okay. Because I was planning to take this for 1 hour extra class if possible. Okay, Yogesh और अदिति ना, दूसरे शेयर का नाम क्या है? अदिति। हाँ, अदिति। योगेश और अदिति, आप जरा सा आपके क्लास से डिस्कस करना, और अगर आज 1 घंटा कहीं मिलता हो तो मुझे बताना, अगर नहीं मिल रहा तो हम सैटरडे को 1 या 1.5 घंटा लेंगे, ठीक है ना? एंड जस्ट लेट मी नो. Yes, sir. Yes, sir. This is because I need to complete some part of the syllabus before you go for your test 1. When is your test 1 going to start from? First week, na? 8 March. 8 March. So are we getting the next week also? Yes, sir. Okay. But then also I would require this Saturday, and just जहाँ नहीं जमता ना तो मुझे please बताना, so that I can be able to complete your syllabus. See, आप second year में हो, इसलिए I am taking very slowly. मैं भगा रहा नहीं हूँ. I am taking more time to explain you the concept and this. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें हमारे syllabus भी छूट जाए, ठीक है ना? So I need to cover some of the syllabus, so I require more time. So you just discuss and give me some 1.5 and 2 hours. Okay, and let me know. Yes, sir. Okay. Attendance हो गया? नितिन सर लेते हैं attendance. हाँ, नितिन सर आए क्या? नितिन सर आप हो गए यहाँ पे? सर वो नहीं है अभी. तो morally let attendance. 63 students are there. 62 students are there, excluding me. Do you want to take orally? फटाफट ले लो. Okay, sir. हाँ, योगेश, you can